Hello बच्चों, so let's read the question. The question says match the columns and find out the correct combination. पहला कॉलम में दिया हुआ है lactic acid, acetylcholine, myoglobin and creatine phosphate. सेकंड कॉलम में दिया हुआ है ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, हाई एनर्जी कंपाउंड, प्रोडक्ट ऑफ anaerobic respiration, neurotransmitter and inhibitor substance. Before solving the question, let's come to the key concept. The key concept of this question is muscle contraction. सबसे पहले स्टार्ट होता है when a motor neuron releases acetylcholine in the neuromuscular junction. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है मोटर न्यूरॉन. दिस एसिटाइलकोलिन रीचेस द sarcolemma of the muscle. After reaching the sarcolemma of the muscle, the action potential runs along the sarcolemma and then finally the action potential enters the T-tubule. उसके बाद this action potential releases calcium ions in the sarcoplasm from the sarcoplasmic reticulum. Then binds to the subunit of troponin जो एक्टिन में प्रेजेंट होता है inactive sites, which are now ready to bind to the myosin heads. Further, ATP is used for binding of the myosin head with the actin active sites. This results in the formation of a cross bridge which basically brings the actin towards the A band. So actin filaments जो होते हैं, they are pulled towards the A band. Attached to the actin are also pulled towards the center of the A band. This results in a muscle contraction. When the ATP is completely utilized, ATP is converted to ADP and PI, and therefore उसी टाइम पे जब मायोसिन होता है, it detaches itself from actin, and now another ATP molecule will bind to the myosin, and again the same cycle will continue. The myosin head will again bind to another actin filament. Attaching to the active site
of an actin filament. This process basically continues. This process continues till the calcium ions are pumped back into the sarcoplasmic reticulum, which will again result in the blocking of the active sites of actin, of the actin filament. This repeated activation of muscle, अगर ये बार बार यही चीज रिपीट होती रहे, इस रिपीटेड एक्टिवेशन से लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट होने लगती है, विच इज अ रिजल्ट ऑफ द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. जब इनफ ऑक्सीजन मसल को नहीं मिलता और उससे ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, which results in the accumulation of the lactic acid in the glucose. And this results in muscle fatigue. Further, muscles के पास अपना खुद का ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है. इनका ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट has more affinity to store oxygen as compared to hemoglobin, और इस पिगमेंट को बोला जाता है मायोग्लोबिन. Some muscles have more concentration of myoglobin and therefore appear red. Next, some muscles also have a huge amount of mitochondria, and इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करके they result in the formation of ATP. ये ATP सिंथेसिस करते हैं. ATP सिंथेसिस जो मसल सेल्स होते हैं, they take this ATP and they convert creatine to creatine phosphate. ATP में जो फॉस्फेट्स हैं उनको यूज करके ये क्रिएटिन से क्रिएटिन फॉस्फेट बनाते हैं एंड ADP रिलीज कर देते हैं. This is because creatine phosphate is a high energy molecule just like ATP, but it is also more stable than ATP. इसकी stability ATP से ज़्यादा होती है, as a result of which it can store high energy phosphate bonds in the form of creatine phosphate in the muscle to be used later. So coming back to the question में सबसे पहले दिया हुआ है lactic acid. We just saw जो lactic acid होता है, it is produced as a result of anaerobic respiration, और इन अ मसल जब बार बार कॉन्ट्रैक्शन होता है और इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, ग्लूकोज जो होता है एनारोबिकली इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. सो ए का हो गया 3. सेकंड इज एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन इज बेसिकली अ न्यूरोट्रांसमीटर. सो बी का हो गया 4. सी मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन जो होता है इट इज ए ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट विच इज फाउंड इन दी मसल्स. तो सी का हो गया 1. There's creatine phosphate, and creatine phosphate we just saw, it is a high energy compound just like the ATP, which stores phosphate bonds in the muscle. So D का हो गया 2. So A3 इन तीनों में दिया है, then B4 इन दोनों में है, then C1 इन दोनों में है, and D2. So the final answer for this question is option B. Hope you understood well. Best of luck.